चलेगा। दर पे तेरे जो भी आया वो तो श्रद्धा के फूल ले आया। माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली, हो दर पे तेरे जो भी आया वो तो श्रद्धा के फूल ले आया। माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली, हो अम्बे मैया मेरी जगदम्बे मैया, हो अम्बे मैया मेरी जगदम्बे मैया, तेरा भगत कभी ना कंबे मैया, हो अम्बे मैया मेरी जगदम्बे मैया, तेरा भगत कभी ना कंबे मैया, मेरी झोली धोने वाली, माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली। एक और वाह, खड़वाल मेरे को ऑफेंड एकदम याद नहीं आ रहा है। क्या बढ़िया शुरुआत हुई है लीना, बहुत ही बढ़िया। नमस्ते अंकल। अंकल आ गए तो हम लोग सेशन शुरू करते हैं आज का। नमस्ते। लीना बहुत मजा आया, अरे हम तो झूम उठे। और बीच में अम्बा की तारीफ हो रही थी तो मैंने कहा बस ये तो तुमने छांट के भजन गाया है। मैंने सोचा ही नहीं वो अम्बा नंबा। वेरी गुड, गुड कनेक्शन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैंने ऐसे ही बोला कि लीना ने उस दिन गाया था, अम्बा ने हर्षिता ने मिस कर दिया था, तो बहुत अच्छा। लीना, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टू इट इम्प्रॉम्प्टू। हाँ, बेंजो यहाँ है और आज यहाँ पे बारिश हो रही है अच्छी, पर आई वोंट मेक इट लॉन्ग। अपने स्पेशल गेस्ट एज ऑलवेज आ गए हैं, पर मैं इससे शुरू करने वाली थी। देखो, मैंने अम्ब्रेला भी ले लिया। तो अम्बा इज गोइंग टू शो अस द प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। ऊपर ऊपर एसेस हैं, नीचे पेसेस हैं, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। तो वी विल स्टार्ट द सेशन वेरी सून आफ्टर द जूम बॉम्बर इज डन। अंकल, ये ना हमारे हर जूम सेशन में बॉम्बिंग होती है इनसे। Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Happy Wimbledon Day. तो आप सबके लिए When life is out of control, फोटो को करके गोल, सीटी बजा के बोल, भैया, all is well. So what that means is, when your bottom is on fire, be like a pressure cooker, keep whistling. Have a nice day. गुड जॉब। कुछ लोगों से होट होट गोल ही नहीं होते हैं। तो ओवर टू अम्बा। अम्बा, आई विल गिव यू द शेयरिंग। Multiple participants can share. So today is July 14th. It's my older sister's birthday also. But Amba is going to talk about the very important topic we have been discussing, adverse childhood event, which is not only important for children, but it's important for society, for adult living, and what all happens in parenting. In a lot of families, there are a lot of issues that come up because of the adverse childhood event that people are not aware of. So first comes awareness, then education, awareness, and then action. So over to Amba. Yeah, Amba, we would possibly be here for some time until the guests come. So we will try to be around as long as we can. Chaliye, listen to you. And Amba, I'm going to mute all and then you can unmute, just in case other people join. You can unmute now. Can you hear me? Okay. So a bit about before everybody goes first, जैसे भारत को भी जाना है, तो एक बहुत important चीज है which I would want to talk even before we start the ACEs and the PACEs is exactly होता क्या है trauma में and why trauma is so important.
क्योंकि once we understand why trauma is so important, तो हमें समझ में आता है कि what exactly is happening in the brain, and then we can discuss, क्योंकि वो सारे तो literally lists हैं, आप बाद में देख के भी आप समझ जाओगे कि क्या क्या ACEs होते हैं. So anything that causes an overwhelming emotional response, which is very threatening and which is very overwhelming, very intense, that we will call trauma. Matlab, it is unbearable. So trauma comes in form of ACEs to children, which we will go back to later. But what happens in the brain when traumatic events happen to children, when ACEs happen to children? So we understand this, that this is our thalamus. We all know that it is the site jahan pe sensory sara input aata hai. So thalamus is called the cook. What it does is कि सारी जितनी भी sensory inputs आ रही हैं, it processes them into it's called an autobiographical soup. Like एक soup बना दिया, and then it sends the relay through two pathways. एक pathway, this is called the low road. The low road is the one which goes to amygdala. The high road is the one which goes from here right up to the prefrontal cortex. The prefrontal cortex is called the watchtower. It's particularly the medial prefrontal cortex. This. So it is the watchtower. So what is thalamus? Thalamus is the cook. सारी sensory input को घुमा के इकट्ठा करके, in one word, this is what is happening to me. जैसे मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, so I know अरे मुझे भूख लग रही है, बहुत जोर की तेज आवाज हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, अरे यार आवाज बहुत ज्यादा है, I need to get out from here, right? So thalamus detects what is happening to me. अब जब कोई भी ओवरवेलमिंगली थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस होता है, इसकी प्रोसेसिंग जो होती है ये खराब हो जाती है और फ्रैगमेंटेड हो जाती है. जब ये फ्रैगमेंट हो जाएगी तो हमको याद क्या रहेगा? कोई साइट, कोई साउंड, कोई स्मेल, कोई टच, राइट? सो नाउ वो प्रॉपर एक सूप जो बन रहा था कि व्हाट इज हैपनिंग टू मी, वो नहीं हुआ और ये पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया. अब थैलेमस नॉर्मली क्या करता है, जो दो रोड्स हैं, जैसे सेंसरी इनपुट आया एंड इट गोज टू द एमिग्डाला. एमिग्डाला इज कॉल्ड द स्मोक डिटेक्टर. स्मोक डिटेक्टर इज व्हाट? इज दिस इनपुट threatening for my survival, right? अगर threatening है, so what does it do? It sends a message to the hypothalamus to secrete stress hormones. HPA axis activate हो गया. So it has bypassed the prefrontal cortex, the thinking brain, because ये जो high road है, it takes few milliseconds longer than the low road, right? So amygdala ने सीधे बोला थिंक, दे थॉट, द एमिग्डाला इंटरप्रेट्स कि अरे ये, एंड ट्रॉमा में क्या होता है कि बिकॉज थैलेमस का जो एक्सपीरियंस होता है वो डिसइंटीग्रेटेड है, तो कोई स्मेल, कोई आवाज, जैसे एक लेडी है who's been brought up in an orphanage. Now you imagine at 6 years she was left in the orphanage by her father, not badly but whatever the reason be. ऑर्फनेज में बहुत ज्यादा हाई साउंड्स होती थी ना, लोग बहुत चिल्लाते थे, बी ऑन टाइम, डू दिस. नाउ शी हैज चिल्ड्रन, बट इफ हर डॉटर स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस, व्हाट हैपेंस? हर एमिग्डाला गेट्स ट्रिगर्ड, हर स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज एक्टिवेटेड. सो द लाउड साउंड इज अ सेंसरी इनपुट. सो कोई उसका ट्रॉमा का एक्सपीरियंस प्रॉपरली जो ऑर्फनेज में हुआ, इट इज नॉट एनकोडेड प्रॉपरली कि अच्छा ये जो एक्सपीरियंस था ये मैं ऑर्फनेज में नहीं हूँ, अब तो मैं अपने घर में हूँ, ये तो मेरी बेटी है. दे आर नॉट एबल टू थिंक. सो दैट इज व्हाई एनी इनपुट which is in the form of a sight, smell, sound, which takes them to the past, it is detected as threatening. That is why people who have undergone trauma have greater physical illnesses, because we all know stress hormones are related to physical illnesses, high blood pressure, heart rate, every diabetes, है ना, cancer. So that is why people who've had traumatic episodes, उन लोगों में physical illness भी ज्यादा होती है, right? अब so many times ये जो high road है, prefrontal cortex है, this is the watchtower, right? Watchtower क्या कर रहा है? The watchtower is supposed to decide whether
the incoming input is threatening or not threatening. ट्रॉमा में ये जो बैलेंस है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का और एमिगडाला का, ये ब्रेक हो जाता है, बिकॉज द वॉच टावर एंड द स्मोक डिटेक्टर हैव टू वर्क इन बैलेंस. तो ट्रॉमा जब होता है तो ये जो बैलेंस है ये इनका गड़बड़ा गया, राइट? सो इनपुट्स विच आर नॉट थ्रेटनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट आर ऑल्सो डिटेक्टेड एज डेंजरस. दैट इज वाई, एंड अ वेरी नाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी करी गई थी जिसमें उन्होंने दे सॉ दैट व्हेनेवर जो लोग ट्रॉमा से गुजरे थे उनसे पूछ के एक स्क्रिप्ट बनाई और उनको फंक्शनल एमआरआई मशीन में लिटाया. फंक्शनल एमआरआई मशीन में जब लिटाया तो उन्होंने देखा कि बेसिकली एमिगडाला लाइट अप हो गया. सो वो जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसको वो फ्लैशबैक ट्रॉमा का आया. तो सबसे पहले तो एमिगडाला लाइट अप हो गया. तो एनी थ्रेटनिंग जो नाइटमेयर या फ्लैशबैक आया उसके कारण एमिगडाला एक्टिवेट हो गया. वेरी सरप्राइजिंगली द स्पीच एरिया, द ब्रोकाज एरिया, इट वेंट ऑफलाइन, वो डीएक्टिवेट हो गया. That is why what we call na that speechless horror, or when you are in terror you become speechless. So Broca's area off ho gaya. Brodmann's area, which is the Brodmann's area is I think 19, jahan pe visual images register hote hain when they first enter the brain. Wahan se fir alag areas of the brain mein jate hain to interpret whether they have meaning or not. Brodmann's area light up ho gaya. Brodmann's area light up ho gaya, which is responsible for the nightmares and flashbacks you get after trauma, right? And the left side of the brain deactivate ho gaya, right side of the brain activate ho gaya. Now left side of the brain deactivate ho gaya. Left side is more logical, more executive function, more sequential. अगर वो deactivate हो गया मतलब हम cause and effect समझ नहीं पाएंगे properly कि अच्छा ये हुआ तो ऐसा हुआ. एंड डॉर्सो लैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफलाइन चला गया. दैट्स द टाइम कीपर. सो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ब्रेक हो गया. सो टाइम कोलैप्सेस. आपको ऐसा लगता है जब आप ट्रॉमेटिक इवेंट में होते हो ये कभी खत्म ही नहीं होगा. So it is trauma में, it is basically the entire brain. That is why when you work with trauma you have to wait. It is not something which can happen in a 2 session ले लो, 6 session ले लो, therapy के ठीक हो जाएगा. नहीं, it's not like that. So that is why ACEs are very important. क्यों? क्योंकि ACEs का लाइफ लॉन्ग इफेक्ट होता है, लाइफ लॉन्ग इफेक्ट रहता है, बिकॉज ब्रेन की पूरी फिजियोलॉजी गड़बड़ा जाती है. दैट इज व्हाई यू विल सी कि जब एमिगडाला, स्मोक डिटेक्टर और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक से काम नहीं कर रहे तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, आप इम्पल्स कंट्रोल नहीं कर पाओगे. आपको जहां गुस्सा नहीं करना, बहुत इमोशनली रिएक्टिव हो जाओगे. आप सडनली, I'll give you an example. So suddenly this girl starts feeling that she's very lonely. घर में लोग हैं, but she suddenly starts feeling that she is very lonely because she remembers that time कि उसके वो घर में अकेली थी और उसके मम्मी पापा were fighting, conflict हो रहा था, and her father was beating up the mother. And she was in her room alone. Now, कोई भी चीज जो उस past memory को reactivate करती है, she starts feeling so uneasy क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ. उसको सारे वो बॉडी में सेंसेशंस आने लगते हैं जो उसको उस समय आए थे जब वो एक छोटी बच्ची थी और वो अपने रूम में थी और उसके मम्मी पापा लड़ रहे थे. एंड शी वाज जस्ट ओवरलुकिंग, कुछ भी नहीं कर सकती थी वो. एंड शी वाज सो स्कैर्ड दैट हर फादर इज बीटिंग अप हर मदर. So because ACEs जो है, adolescents, ACEs are so important क्योंकि ऐसे बच्चों की आप देखोगे कि पूरी जिंदगी, पूरा उनका कॉग्निशन डिस्टर्ब हो जाता है. क्योंकि जितना भी हम लर्निंग प्रोसेसेस होते हैं, अटेंशन होता है, मेमोरी होता है, इफ यू आर फीलिंग सो अनईजी इन योर बॉडी, आपकी पूरी एनर्जी किसमें चली जाती है? इन ट्राइंग टू फील बेटर. व्हेन यू आर ट्राइंग टू फील बेटर, उसके लिए आप कई बार ड्रग्स लोगे, उसके लिए आप कई बार अल्कोहल लोगे, उसके लिए आप अपनी इमोशंस को नम करोगे. तो सारी एनर्जी और सब्सटेंस अब्यूज चला गया इन जस्ट हैंडलिंग दोज अनप्लेजेंट फीलिंग्स.
और कोई चीज भी, एनीथिंग लाइक, बिकॉज द मेमोरी इज वेरी डिसइंटीग्रेटेड, इट इज नॉट अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई है, इसीलिए एनीथिंग दैट रिमाइंड्स देम टू द पास्ट मेक्स देम फील कि वो अभी हो रहा है इंसिडेंट, और उनके अंदर बॉडी में सारे वो सेंसेशंस आ जाते हैं. दैट इज व्हाई ट्रॉमा थेरेपी सिर्फ माइंड से नहीं हो सकती. सो वी कांट डू जस्ट कि सोचो नहीं समझो कि अब तो ये प्रेजेंट में तो कुछ नहीं है, वो खत्म हो गया है, वो सिर्फ जस्ट यूजिंग द माइंड से नहीं होती. टॉप डाउन प्रोसेस इज important, बट बॉटम्स अप processes where you regulate the breathing, movement, touch, ये सारी चीजें बहुत important होती हैं, and they have to be done on a regular basis. Only then you recover from trauma. So that is why I said, let me start with this as to why ACEs are so important. Because imagine आप एक बच्चा जब ACEs से गुजरेगा, how many years and years, and how as a society it is important. जो भी वॉर वेटरन्स होते हैं, वॉर वेटरन्स suffer from often what is known as PTSD, post traumatic stress disorder. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिन वॉर वेटरन्स को होता है, उनकी वाइफ्स डिप्रेस होती है. ठीक है, जब एक मदर डिप्रेस होती है तो बच्चे ज्यादा इनसिक्योर और एंग्शियस होते हैं, राइट? सो हाउ व्हाट इज हैपनिंग इज ट्रॉमा इज बीइंग ट्रांसमिटेड, राइट? एक सोल्जर आया, उसके कारण उसकी वाइफ डिप्रेशन में चली गई, वाइफ के कारण उसकी बच्ची इनसिक्योर और एंग्शियस हो गई. सो सी, इट इज द एंटायर सोसाइटी एंड हाउ इट विल कीप ऑन पासिंग डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. That is why it is so important that we understand the and जब भी लोग ट्रॉमा लेके आते हैं ना, मेडिसिन्स आर अमेजिंग. मेडिसिन्स कैसे वर्क करती हैं कि मुझे एंजाइटी के सिम्टम्स हो रहे हैं तो मेरे एंजाइटी के सिम्टम्स को शट डाउन कर देंगी. यस, मेडिसिन्स वर्क वेल, बट nobody is bothered to ask कि उनकी लाइफ की जो इकोलॉजी होती है, what they love, what they hate, what matters to them, what is important to them, how they are feeling in the body, ये तो कोई उनसे पूछता ही नहीं है. क्या चीज आपके जीवन में खराब हुई है ना? That is why a lot of these people who go through trauma also end up as schizophrenics. Why schizophrenia? क्योंकि मेंटल ब्रेकडाउन हो गया. आपको इमेजेस दिखाई दे रही हैं, hallucinations हो रहे हैं. You don't know that these hallucinations are those disintegrated fragments of the trauma. So that is why it's really important as a society, and it starts like there's one very beautiful, he says that आप जितने भी criminals के बारे में पढ़ लोगे, सारे criminals के adverse childhood events होते हैं. कोई भी एक बड़ी अच्छी happy family से नहीं आया होता. So if we want to improve like the well-being of the society as a whole, I think we need to deal with ACEs very, very importantly. So now I'll take you, just because I thought ये हम सबको इसका importance जानना बहुत जरूरी है. So let's talk about that first, and then, so like I said that it's basically we understand that trauma is unbearable, बहुत threatening feel हो रहा होता है वो इंसान इतना ज्यादा. Yes, there's another thing what happens in trauma is people go into collapse. जैसे आप एक छोटे बच्चे हो and you are seeing your अभी एक लड़की से बात हो रही है तो she goes into collapse, वो 12-12, 13-13 घंटे सोती है. She says, मैं 13-13 घंटे सोती रहती हूँ, I just don't get up. Why? Because as a child, when there was fights at home, when there was violence at home, she would go into her room and she would sleep off. One, to save herself, कि मैं तो सो रही हूँ, and two, to escape what's happening, whatever is happening at home. Now, that is the collapse. है ना? तो जब लोग collapse used to करते हैं, escape or to avoid things, bad things which are happening. So that is why a lot of times people will continue using that coping strategy even in the present times, even as adults. Chaya, you wanted to say something? I just wanted to quickly ask before you go further, कि how does it even make sense to think कि Pavlov conditioning जैसा होता है? तो how is this different than, would you be addressing that later? How you opposite of it, or something that good comes out of similar experiences? Yes, जैसे Pavlov की conditioning होती है ना, वैसे ही response की extinction भी होती है. So, but Pavlov conditioning में एक जैसे ये जो collapse है typically is learned helplessness. जैसे उन्होंने क्या किया कि dogs को उन्होंने current दिया and those dogs were not allowed to escape. तो कुछ टाइम जब करंट देते रहे उसके बाद उन्होंने वो दरवाजा खोल भी दिया, इट वाज एन शील्ड,
the dogs thought that they'll never be able to escape and they remained there only जहां पे उनको करंट लग रहा था. That is called learned helplessness, right? Collapse is exactly like learned helplessness. But when you do trauma treatment, so you teach them that you are safe. That is why to feel viscerally safe yani your entire body has to feel safe. That is why that is a very important part of trauma treatment कि आपको जब ऐसे safe लगने लगेगा तो आप continuously उस person को क्या करते हो ऐसे when they are in a community, when they are doing dancing, when they are doing role plays, right? They are feeling safe that they're there in a community. There's nobody. अब ये लड़की है इसको there's something called complex PTSD. Complex PTSD तो चलो trauma एक बार हुआ, right? Complex PTSD क्या होता है कि trauma रोज हो रहा है. भाई रोज घर में झगड़ा हो रहा है, रोज फादर ड्रिंक करके आ रहे हैं और रोज इस बच्ची को अपने कमरे में अकेले बैठना पड़ रहा है डर के मारे कि अभी कोई मेरे को आके चिल्ला नहीं दे, अभी somebody will come and molest me, like another girl was molested by her grandfather, right? So she always lived in terror कि ये कभी भी आ जाएंगे. और बाद में when they grow up, when they are a little older, there is, because the traumatic memory is very confusing, they are very confused कि वो victims थे कि वो willing participant थे. That creates a lot of shame in them. So इतने impacts है ना trauma के that literally that is why I tell every parent that to give to give a child a calm and peaceful atmosphere while growing up is the most important job of a parent. If you can't give that, please don't have children. But otherwise we are creating a sick society. Because our children are going to go through ACEs and then they'll have their own mental health issues and physical health issues, right? And trauma अलग-अलग you may have, जैसे किसी को physically, viscerally क्या feel होगा? Crushing sensation, right? Chayam, is your answer, was your question answered? Because Yes, yes. can be good, na? Yeah, it Continuously just came to my was- mind and Yeah, yeah. And very then the good. other thing is when you see in India, like even I see a lot of Indian families here. So trauma can be very different for each child. Na? Matlab, there may not be physical or sexual or any of these typical trauma situations, but it can be chronic low level. So I'm sure you'll Yes. talk about that. Yes, it's there in the ACEs, na? वो ACEs में पूरा है, that list is there, right? So it can come as always being. So you become hyper vigilant क्योंकि आपका smoke detector ज़्यादा काम कर रहा है ना? Amygdala is working much faster, and the watchtower, the medial prefrontal cortex is not working well. Because that balance is broken, you may be always hyper vigilant, and something which may actually not be dangerous, आपको वो dangerous लगती है, ना? Self loathing होती है, shame होती है, nightmares and flashbacks, brain fog होता है. That is why you are not able to fully attend. Or this is very important. These people, joy and intimacy are missing in their lives, right? Why? Imagine either you have never felt that security, that trust, that love from an adult human being. तो आपको जब मिला ही नहीं है तो आपका लेंस कि दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, you'll always feel that people are not good, people are not there for you. So that is why it is seen that trauma victims या तो वो violate हो चुके हैं या कई बार उन्होंने भी गलतियां करी हैं, right? So either they themselves don't trust themselves or they don't trust the others. When they don't trust the others, their intimacy and joy in relationships, literally, it also happens when they have come from a lot of like for the war veterans and all, वो numb हो जाते हैं. जब वो numb हो जाते हैं, they don't feel joy in their relationships. अब जब joy feel नहीं करेंगे, they start shaming themselves. मैं कितना खराब हूँ, I'm not feeling happy, मेरे सारे घर के लोग बैठे हैं, मुझे खुशी क्यों नहीं लग रही है, सब लोग कितना enjoy कर रहे हैं, why can't I feel happy? Because they have numbed themselves, because those experiences were so horrible that at that time they had numbed themselves. So these people begin self-loathing themselves. They start hating themselves because they think कि भाई मैं तो बहुत ही खराब हूँ क्योंकि मुझे तो कोई joy feel ही नहीं हो रहा इनके साथ बैठने में. That is why emotionally reactivity, चाहे rages हो, चाहे numbing हो, चाहे use of substance abuse हो, to push down what they are feeling.
all these happen whenever we have trauma. And basically we are not in control of ourselves, right? Because now the watchtower, the medial prefrontal cortex, is the one helping us to remain quiet, helping us to remain calm, to decide the balance कि ये चीज एक्चुअली डेंजरस है या ये डेंजरस नहीं है, कि इस चीज में मुझे क्या एक्शन लूंगा तो क्या मुझे लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा. तो जब ये बैलेंस ही खराब हो गया तो यू आर रिएक्टिंग जस्ट आउट ऑफ योर अमिगडाला. So that is why also you are overwhelmed, enraged, ashamed or collapsed. That is why वो लोग खुद को भी पसंद नहीं करते हैं, right? Self hatred, self loathing बहुत होती है ना. So ultimately हमको करना क्या है? What does healing look like, right? We have to find that balance between the amygdala and the prefrontal cortex, right? We have to find a way to be calm and focused. We have learned to maintain calm in response to images, thoughts, sounds, or physical sensations that remind you of the past. Find a way to be fully alive in the present. Like I said, they are not able to be fully alive in the present. They are not engaged with the people because they have numbed themselves, or they are in freeze, they are in collapse. Like it is called deer in the headlights response. है ना, deer headlights में होता है तो कैसे freeze हो जाता है. That is the collapse response. Then this is beautifully said, not having to keep secrets from yourself, because it was somewhere very beautifully written. I don't remember where. They said, knowing what has happened to you and completely accepting what has happened to you. जब तक के कुछ ऐसा था that the suffering doesn't end because of the lie people tell themselves. Right. So that is why if you have to like kind of find an end to suffering, you have to be completely honest from yourself. Yes, this was it, this happened, ऐसा था. तो वो धीरे धीरे आपको acceptance आने लगती है. And this is exactly the limbic system therapy, the balance between the medial prefrontal cortex and the amygdala. And it gets us back to what is known as window of tolerance. Window of tolerance is, I had shown you that picture last time, window of tolerance, that you go into hyperarousal or you go into hypoarousal. Hypoarousal is shutdown, freeze, collapse, numbness. Hyperarousal is anger, anxiety, rage. तो हमको अपनी विंडो ऑफ टॉलरेंस में आना है और विंडो ऑफ टॉलरेंस को ब्रॉड करते जाना है, राइट? सो ट्रॉमा बेसिकली श्रिंक्स आवर विंडो ऑफ टॉलरेंस, कि हम जल्दी जल्दी या तो हाइपर अराउजल में चले जाएंगे या हाइपो अराउजल में चले जाएंगे. और इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा, लाइक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्या है कि एक जनरेशन में ट्रॉमा हुआ, नाउ दिस पर्सन स्टार्ट्स ड्रिंकिंग to basically reduce or numb the effects of those nightmares, flashbacks, the anxiety, what's happening in the body. आप जब उसको नम करने के लिए यूज कर रहे हो तो आपके घर में जो आपके बच्चे हैं, they are seeing you now because you have had alcohol or you had drugs. What's happening? You have lost that inhibition. Now you may get angered very fast. You may get, or you may be totally neglectful of your child. So वो emotional neglect हो गया, जो भी ACE हो गया, right? So now this child now again will not be able to have very good relationships, will not know how to regulate their emotions, because for a child to learn how to regulate emotions, you need a co-regulated adult. क्योंकि जब एक माँ एक बच्चे को गोदी में उठा के रेगुलेट करती है ना, तो बच्चा इससे सीखता है कि हाँ, ये इमोशंस रेगुलेट कर सकते हैं हम. Then they see how other people in their house regulate emotions. That is why intergenerational trauma can end, and this is called a transitional character, right? Transitional character क्या होता है? One who decides to heal. There is a girl, she's a doctor. She realized that she has a lot of generational trauma happening to her. So now she's taking therapy. She has done a lot of work on herself. She said, मैं अब अपना बच्चे होने से पहले I'm going to heal this and I'm going to be that parent. Right. So that was the most beautiful thing, that she's become the transitional character who's healing, who's understanding, who knows the needs of a child, kya dena hai usko, so that she doesn't pass on the trauma from one generation to another. Right. Or this is just for theory. Kya mechanisms hote hain? So they did ki epigenetic changes hote hain because when there is trauma in the environment, aapki DNA methylation. So there are a lot of such things. एक glucocorticoid receptors पे भी इफेक्ट होता है, right? So these are all how DNA changes. तो एक बार DNA मेरे में बदल गया तो वो तो मेरे बच्चे में भी चला जाएगा ना.
सो मेरे में एपिजेनेटिक चेंज हुआ, विच मीन्स कि मेरे में जो ट्रॉमा मेरी लाइफ में हुआ उसके कारण मेरा डीएनए में चेंज आया, बट मेरे में चेंज आ गया तो मेरे बच्चे को तो वो पास ऑन हो गया ना. सो देयर इज दिस बायोलॉजिकल मैकेनिज्म because of which trauma is also transferred to the next generation, right? Then altered brain structures, like trauma can impact the reason. So again, neurobiological changes honge aur ye jo effects honge, so children of trauma survivors may inherit these altered stress response because again trauma की एक और उन्होंने जब study करी, so how so this was a very beautiful study. जब 9/11 हुआ, so there was this child who was I think 5 years or 7 years का बच्चा था. वो जो टावर 9/11 में जब वो फर्स्ट अटैक हुआ प्लेन का, he was in a school from which he could see that tower, है ना. अब इस बच्चे को कुछ हुआ नहीं था और पेरेंट्स had just dropped off क्योंकि सुबह सुबह हुआ था. So parents had just dropped off this child to school. तो पेरेंट्स तुरंत जैसे ही हुआ वापस चले गए, right? They took the child and they came home. Now, two things happened here. One, the child returned to safety very fast, right? And he was able to run away and save himself. So he became an agent in his own rescue. Number one, empowering. Number two, his parents were very calm and composed. Children take cues from their adults. तो अगर adult किसी सिनेरियो में काम और composed रहेगा, तो वो बच्चा देखेगा ये मेरी मम्मी अच्छा ये तो काम एंड कंपोज्ड है, which means there's nothing to worry, there's no danger. So बच्चे को, छोटे बच्चे को कैसे पता कि ये डेंजर है कि नहीं है? They will, so taking cues from adults is very important. और 2-3 दिन के बाद इस बच्चे ने ड्राइंग बनाई, उसने टावर बनाया, उसने प्लेन बनाया और उसने नीचे ब्लैक ट्रैम्पोलिन बनाई, right? He said, I've drawn this trampoline. So his somebody visited, they asked, what is this? Bully, this is a trampoline. If people want to save themselves, they can jump on it. Just see where his imagination went. So again, when you face trauma and those who are not able to save themselves, उनकी memory तो परेशान कर ही रही है, उनकी imagination भी खराब हो जाती है, because the right side of the brain is linked with imagination. उनकी imagination, that is why they cannot see possibilities. तो वो ठीक हो सकते हैं, ये heal हो सकता है. Even to imagine these possibilities for them is very difficult because just like memory is impacted, even imagination is impacted, right? So this is basically, and then psychological mechanisms क्या है? Attachment and parenting styles. Now suppose एक parent ही trauma से गुजरा है, उसको अपने बच्चे को प्यार करना ही नहीं आएगा. जब वो अपने बच्चे को प्यार नहीं करेगा तो अगर या वो फिजिकल निग्लेक्ट कर रहा है या वो इमोशनल निग्लेक्ट कर रहा है, सो लाइक चिल्ड्रन के लिए ट्रॉमा क्या होता है? सम थिंग्स व्हिच दे नीड they don't receive it and some things they get which they shouldn't get. So basically आप देखोगे कि दो टाइप का है, right? So if they don't get the love, the affection, the safety which they need from their parents, that is also will affect their attachment styles, and that's going to be again an adverse childhood event from them, right? Two authoritative parents, controlling parents, angry parents, they make life very dangerous for the child. क्योंकि हर बार वो बच्चा आएगा उसको लगेगा मेरा पापा गुस्सा तो नहीं करेगा, मेरा पापा चिल्लाएगा तो नहीं, या मेरी मम्मी गुस्सा तो नहीं करेगी. So again that child is staying always in fear and danger, right? Then behavioral and coping, maladaptive coping. If a mother, like why they said that the children of depressed mothers are insecure or anxious, because you are learning from the mother how to deal with events in life. If mother goes depressed, numb, collapse, freeze, बच्चा क्या करेगा? ये maladaptive coping mechanism सीख जाएगा, right? And transfer of anxiety and fear. Like transference कैसे हो रही है कि if a parent is very agitated, very anxious, very fearful, तो बच्चा तो anxious और fearful होएगा ही ना, because naturally he's seeing his parent that अगर मेरा parent anxiety है और parent को इतना सारा डर लग रहा है, तो बच्चे को तो डर लगेगा ही सही. How will the child not feel scared, right? So that is transference of anxiety and fear. फिर family dynamics होते हैं और वही family जहाँ बहुत authoritative है, you know, so many things. They are all social mechanisms. Collective trauma, जैसे कि partition के time हुआ था, it was a collective trauma, right? Genocide, जो Holocaust survivors, all that was what? It was a collective trauma. Then
social environment में जहाँ discrimination है, racism है, all these things are what? They are a part of the social environment, है ना? Environmental mechanisms में बहुत chronic stress exposure. Like if there is regularly too much, be it financial stress, that is why poverty also comes under one of the ACEs, which are not personally affecting the child, but it is causing too much stress to the child because the environment is very stressful. And then there is instability. That is why in parenting, consistency is a very important thing. इसे कंसिस्टेंसी रखो. आज जो चीज आप बच्चे को डांट रहे हो, गुस्सा कर रहे हो कि नहीं 2 घंटे टीवी नहीं देखना, कल आपके गेस्ट आए और आप बोलते हो हाँ हाँ 2 घंटे टीवी देख ले. हाउ विल द चाइल्ड नो दिस इज गुड और बैड? द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू डिसाइड कि ये अच्छा है कि बुरा है टीवी देखना, right? So consistency is very important in the case of parenting. Then environmental triggers like poverty, violence, lack of social support, ये सारी चीजें inherited trauma के सारे experiences. So now coming to the adverse childhood events, right? Basically, they refer to a set of potentially traumatic events that occur between 0 to 17 years, and they have a significant impact. So what are the ACEs? Physical abuse. Physical में कहीं पे भी even थप्पड़ मारना और बंद कर देना, बाथरूम में बंद कर देना, right? सारी चीजें physical abuse. Emotional abuse, and इसमें verbal assaults, threats, doom predictions. तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, that's a doom prediction, right? And threatening, warning, ये सारे अलग अलग types के emotional abuse हो जाते हैं. Sexual abuse, even showing a child pornography also comes under sexual abuse, right? Then these are the things जो बच्चे को चाहिए. Physical neglect है, if the child doesn't have necessary food, shelter, appropriate supervision, because a child needs supervision, right? A child doesn't know कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है. So physical neglect and emotional neglect. Emotional neglect क्या है? Failure to meet a child's emotional needs, including affection, support, and attention. So if a child doesn't feel valued, doesn't feel seen, doesn't feel heard, right? A lot of people say that, I feel that I'm invisible. Nobody's ever asked me what I want. So that feeling of invisibility is coming so many times from your childhood where you felt invisible, that you were never asked, right? Then this is household dysfunction. Domestic violence, exposure to violence between caregivers, and a substance abuse, living with a household member who are addicted to drugs or alcohol, mental illness. If you see, all these basically cause an environment which is very chaotic. Environment में stability नहीं रहती है, कभी भी झगड़ा हो गया, है ना? कभी भी ड्रिंक्स लेके आ गए तो चिल्ला दिए, गुस्सा कर दिए, थाली फेंक दिए, आपको बेड से पुल आउट करके मार दिए थप्पड़. So all these things basically result in a chaotic home environment. Then mental illness. जब untreated mental illness होगी तो क्या होगा? You are not sure of how that person is going to react. वो person चिल्लाएगा, वो person रो रहा है, क्या हो रहा है? तो it's basically again causing a chaotic environment. Then incarcerated household member, with a household member who's in prison, parental separation or divorce, right? Experiencing the separation of parents, right? And beyond these 10 major ACEs, जो हम ACE quiz में ये 10 cases के रहते हैं, right? 4 or more is very risky. Like a score of 4 or more is literally जितने अभी एक very educated person, right? A score of 5, right? And he has borderline personality disorder. भयंकर मूड स्विंग्स, मतलब उसके ऑफिस में एक बंदा काम करता है तो उसको पकड़ के मार डालेगा, पीट डालेगा कि लोगों को आके उसको बचाना पड़ा. मतलब इतने रेज में चले जाता था वो. So but he has a score of 5. So ACE score of 4 plus more is very risky. Then discrimination, but even a score of 1 or 2 can cause a lot of mental trauma, right? A lot of mental illnesses. ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 से ऊपर होएगा तो ही आपको mental or physical illness होएगी. So beyond the ACEs, there is discrimination, poverty, racism, discrimination. You will not believe, even now children come and say कि हमारी मम्मी लड़के को ज्यादा प्यार करती है. Even now, right? To this date, discrimination between girls and boys is still there, right? Poverty, racism, community violence, adjustment to major life changes, bereavement, adult responsibilities. These are called what? Adult children of emotionally immature parents.
So, you know, where the parents are very immature. So a girl is coming, बोली कि मेरी मम्मी जो है ना वो बच्ची है, वो पूरे समय ना चिड़चिड़ करती रहेगी, है ना, बस पूरे समय चिड़चिड़ करती रहती है, बस कि कोई उनको ना अटेंशन देते रहे। बोलती मैं अपनी मम्मी के पास जाती, मम्मी आपको अटेंशन चाहिए क्या? So imagine that girl is 20 years old and she knows that her parent is not emotionally mature. So that is adult children of emotionally immature parents. Now it is said that chronic diseases, increased risk. Now we know because ये सारे किससे हो रहे हैं? Obesity एक बहुत अच्छी research थी कि obesity के उन्होंने बोला कि ऐसे बच्चे to feel secure क्या करते हैं? खाते रहते हैं. They'll keep eating because the weight on their body makes them feel secure. You know, ज़्यादा grounded feel होता है. So that is why a lot of trauma में obesity मिलती है. And heart diseases तो stress hormones continuously secrete हो रहे हैं, तो high heart rate, blood pressure, diabetes. Then health risk behaviors इनमें बहुत मिलता है, smoking, substance abuse, risky sexual behaviors. Life expectancy की studies जितनी हुई हैं, ACEs जितने का high score होता है, उनका shorter lifespan होता है. So longevity is also impacted. और mental illness में तो increased risk of depression, anxiety, PTSD and other mental health disorders है ही सही. And the surprising thing is that when you go, it's very good to have medication. But if the root cause is not sorted out, what are you doing? You're just numbing what you're feeling. You're not actually dealing with the source of those feelings. You're not actually giving them that warmth, that love, that safety in which they can heal, right? And behavioral problems मत ज़्यादा होते हैं क्योंकि behavior regulation और impulse control ये दोनों काम जो हैं ये medial prefrontal cortex के होते हैं, watch tower के होते हैं. So that is why behavior regulation और impulse control में बहुत problems आते हैं, right? इनकी educational attainment because brain fog होता है, they cannot concentrate because उनकी पूरी energy कहाँ जा रही है to deal with what they are feeling in the body. So they are not able to concentrate on the cognitive tasks. So that is why such children actually मतलब अभी एक दो बच्चे हैं अभी जो you know they are trying so hard and they feel so disheartened मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही, that leads to greater depression. कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की बट पढ़ नहीं पा रहे तो उनका डिप्रेशन बढ़ जाता है. So see how it becomes just a very vicious cycle, right? And they have great difficulty in forming and maintaining healthy relationships because they don't know whom to trust, they don't know whom to distrust. So they have a great issue in forming and maintaining healthy relationships because life अगर आपको relationships healthy चाहिए, you have to, your smoke detector have to work well and you have to understand that कैसे आप अपना behavior change करोगे. You have to read people's emotional cues very nicely, right? But आप वो ही नहीं कर पा रहे हो, आप हर emotional cue को dangerously read करोगे, तो आप तो react करते रहोगे ना, आप तो झगड़ा करते रहोगे, right? So जब आप react करते रहोगे, झगड़ा करते रहोगे, तो आपकी relationship कैसे ठीक चलेगी? So that is why they have a great difficulty in forming and maintaining healthy relationships, guys. ACEs quiz तो पन्ने देख ली, we had sent. So we need a lot of things. We need early intervention. Most important, we need trauma-informed care. और हमारे कहीं पे भी, nowhere in India, we have trauma centers, right? I wish someday I can have one. I don't know. Again, this is the prefrontal cortex. This is the planning, anticipation, sense of time, inhibition of this is the one which goes offline, medial prefrontal cortex. इन दोनों को मिला के emotional brain बोलते हैं. The limbic brain and the brainstem, which is basically, so the जो brainstem होता है ना, ये womb में form हो जाता है, right? Limbic brain keeps developing after you're born. 6 to 7 years तक maximum development होता है limbic brain का, but it keeps to mature during adolescence. And prefrontal cortex, especially the medial prefrontal cortex, it continues to mature somewhere around 25 to 27 years of age. So that is how different areas, that is why, you know, ऐसा नहीं है कि हमारा brain fully formed है when we are born. No, only the brainstem, because it is basic housekeeping, right? Arousal, sleep, wake, hunger, satiation, breathing, chemical balance. That is why ये form हो जाता है womb में, और बाकी दोनों जो है वो after birth form होते हैं, right? ये हमने बात कर ली. And one thing we have to know is there is this stress. Stress can be eustress or positive stress. जब exam होता है तो हम पढ़ने बैठते हैं and we study a lot. That is positive stress. हमारी
द परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है. देन देयर इज टॉलरेबल स्ट्रेस. हम कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के हम कर सकते हैं. It is toxic stress which causes complex PTSD, right? That is prolonged and intense stress response when that occurs when a child experiences strong, frequent, or prolonged adversity without adequate adult support. This is very important, and all researchers have said that अगर हमें एक supporting caring adult मिलता है, so we so many times don't have the effects of toxic stress, right? और इसीलिए इसमें क्या रहता है, जो toxic stress होता है उसमें ये दोनों major factors हैं. वन क्या है, chronic activation है stress response का, लगातार stress hormones secrete हो ही रहे हैं, और lack of supporting relationships है, right? So absence of a supporting buffering relationship with a caregiver or an adult. So these are the two major impacts, right? And this causes a lot of hormonal changes. That is why you'll see today PCOD कितना हो रहा है, autoimmune diseases कितने हो रहे हैं, right? They are all linked. Our endocrine system, our nervous system, तो nervous system क्या हो जाता है, dysregulate हो जाता है, तो behavioral changes आ जाते हैं, है ना? Endocrine system changes, तो thyroid, PCOD, so many things have increased, right? And the autoimmune system. So the autoimmune diseases, because the immune system shuts down. So all these changes happen because of toxic stress, and epigenetic modifications तो होती है, DNA methylation and glucocorticoid receptors change, ये दोनों तो proved है. So this is exactly what is a normal versus a toxic stress, right? जो लगातार ACEs होते जा रहे हैं throughout, especially in the age of 0 to 7 years, because that time the limbic brain is developing. So normal stress response क्या होगा, brief and infrequent होगा. It cortisol and adrenaline release हो गया. Body returns to baseline after the stressor is gone, है ना? और ये adaptive होता है और ये manageable होता है. Now, if the duration and frequency of stress increases, तो क्या हो गया, toxic stress response हो गया. ये prolonged and frequent है, chronic activation हो गया, persistently high levels of cortisol and adrenaline हो गए, disruption हो गया brain development का, and this leads to mental, physical and emotional problems. Right. So ACEs and toxic stress, that higher the ACE score, the greater the odds we may experience health issues like cancer, diabetes, depression, stroke, and heart disease. This all his research has proven, right? And most leading causes of death are associated with ACEs. So this is all documented, like verified. And now the best part, protective and compensatory childhood experiences, right? So these are the PACEs, right? They help buffer against the negative aspect and they promote resilience and positive. So सबसे important क्या है, supportive relationships, right? That you have at least one stable, nurturing, supportive caregiver, and peers हैं, friends हैं, दूसरे adults हैं, teachers हैं, grandparents हैं. So you have positive relationship with other adults also. Then, like I said, feeling safe and secure. वो बहुत important है कि मुझे viscerally safe feel होना चाहिए. That yes, I don't have anything to worry. That is why a safe and a stable environment, safe and stable, जितनी बार इसको 100 times भी repeat कर दो तो important है. That instability creates a lot of, suddenly stress hormones release हो रहे हैं, फिर so you don't know because you're continuously triggering your amygdala. And feeling protected from harm or abuse. Somebody is there to protect you, right? Then a sense of belonging. Because feeling connected to a family, that is why जब भी trauma treatment होता है, आपको community में involve करने की कोशिश करते हैं, right? You become involved in the community. That's very important. क्योंकि आप, there's this very, I don't know if you've heard of it, there is this SOS village kind of thing. It's there in the US, I think. हमारे रायपुर में माना के पास है. It's called the SOS village. So they've made houses in there's a big campus. उसमें उन्होंने 10 houses बनाए हैं. उस 10 house में उन्होंने एक mother appoint करी है. वो mother के साथ 10 orphans are living. They have 3 bedrooms. जो सबसे छोटे orphans होते हैं, वो माँ के साथ सोते हैं, right? And बाकी orphans जो जैसे जैसे थोड़े बड़े होते जाते हैं, they go and सारे घर का काम इकट्ठा करते हैं,
झाड़ू पोछा लगाएंगे, कुकिंग करेंगे, बर्तन धोएंगे, सुबेरे बच्चे उठ के स्कूल जाएंगे. So they've made it like a community for the orphans. So it's called the SOS village, right? यहाँ पे माना में है, so it's called the Mana SOS village. So see how beautifully they are feeling connected to a family. So their total every उसमें 10 members हैं. तो वो they are promoting that feeling of safety and belonging and protection from harm and abuse, right? Involvement in group activities, sports, teams, clubs, religious groups, opportunities for skill building honi chahiye na. So like these children are also sent to school and they have learning opportunities. Then they're participating in extracurricular activities. Wahan pe bachcho ko agar tuition chahiye hoti hai, so the government pays this organization, the SOS village, it pays और बच्चे को extra tuition, those children who are falling behind in their studies. So they are able to, support. Now, this is again very, very important. Emotional validation and support. Emotional validation kya hai? So we say that whenever you have a child, never say, don't feel. Why are you feeling sad? तुम्हारे पास तो कोई sad feel करने का कारण नहीं है. सारी चीजें तो है तुम्हारे पास. So never tell a child, don't feel. Right? So emotional validation is you validate a child's feelings. That अच्छा क्या लग रहा है? Okay, are you feeling scared? Oh, what is making you feel scared? Like you talk to them, you understand their emotions. You don't tell them to snap out or you don't tell them कि नहीं ये emotions खराब है. So that's called emotional validation and encouragement to express emotions and talk about feelings. Everybody should be allowed to speak. हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है. अच्छा आ रहा है क्यों आ रहा है? Okay, इसलिए आ रहा है. Oh, I understand. Now, if they want help, you can give them the help. Would you like help? But you have to ask them before, just pouncing on. Say, ये करो तो ठीक हो जाएगा. ये करो तो ठीक हो जाएगा. Right? So that is why encouragement to express emotions and talk about feelings. Positive role models. So for all parents here, raise yourself before you raise your children. Right? We have to have positive role models who demonstrate healthy behaviors, good emotional regulation, how they can stay calm and peaceful, and how they can keep their children safe. Guidance and support from mentors and community leaders. Then a sense of purpose. Engaging in activities that provide a sense of purpose, like the meaning of वो जो अपन भारत की talk सुन रहे थे ना, a sense of purpose and meaning. So that is why involving them in activities that give them a sense of purpose, like setting and achieving personal goals. कि कैसे छोटे-छोटे, not even the goal shouldn't be too big, which are unachievable. Those are called these SMART goals, right? They are SMART goals क्या क्या? Specific, measurable, achievable, realistic, time bound. So SMART goals होने चाहिए. Then healthy family function, routine, stability, positive family interactions, supportive family dynamics that promote well-being, right? And impact of PACEs, you see, all सारी चीजें better हो गई. Improved mental health, better physical health, enhanced social skills, improved relationships, and social, academic, and professional success. So this has also been all documented and studied कि PACEs के impact से ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाती हैं? Important हो जाती है. And we spoke about this. This is the transitional character, like who changes the trajectory of their family's journey. And transitional character के क्या क्या characteristics होते हैं, right? One is awareness, right? Very important. Awareness नहीं होगी तो आप अपने patterns को बदल ही नहीं पाओगे. So he recognizes the destructive patterns of behaviors and understands the impact of these patterns on their life and their future generations. Then determination, commits to personal change and growth. And this transitional character himself shows resilience and perseverance in the face of challenges. This character has to have naturally healthy relationships outside of the, even if they are in a dysfunctional family system. तो आप बाहर तो आप healthy or supportive relationships form कर सकते हो, right? And they seek and maintain relationships that promote well-being and growth. So they know how to recognize toxic relationships and to remove themselves. They are well regulated. Emotional regulation इनकी अच्छी है. They practice self-reflection or emotional intelligence. And this is very important. Adaptability. It is one of the major skills of a transitional character. Adaptability, mental health के लिए अगर आप बोलो कि what is the one criteria for good mental health, it is adaptability and flexibility. Right. Then seeking help. Now, if this person recognizes the need for external support, seeks professional help, so he's encouraging his internal family that jab zarurat ho, seek external help, right? There's nothing wrong in seeking help. And he himself engages in self-help practices as reading, support groups, self-care, and he models behaviors. And
acceptance. There's a very big role of acceptance in becoming a transitional character, right? The act of acknowledging and embracing one's thoughts, feelings, and experiences without judgment or resistance. This is a lot of mindfulness, right? You're seeing your thoughts, you're seeing your feelings, you're watching your experiences, but you are not judging them, and you're just watching them. So you recognize that this happened to you, or I'm having a thought that, I'm having a feeling that. So you recognize that you are not the mind, you're not the body. So you're watching it, but you have created a distance that I am pure consciousness and this has happened. I'm not the mind and the body. So with acceptance and mindfulness, there comes a lot of changes. और acceptance is a very important part, क्योंकि जहाँ acceptance आती है वहां पे क्या आ जाता है, there is reduced anxiety, emotional regulation better हो जाती है, calmness नहीं तो ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वापस से तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, आपकी बहुत सारी एंजाइटी रहती है, राइट? And then you have basically a lot of calmness and clarity. There is decreased depression, there is improved resilience, self compassion होता है ऐसे लोगों में, इसलिए उनकी self esteem अच्छी होती है, वो लोग self को criticize नहीं करते हैं, those people who are very accepting. And these people have shown that इनके lower cortisol levels होते हैं, तो less stress, so less physical and mental illnesses, and good coping responses है, healthy coping responses है. फिर एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी रिलेशनशिप्स बेटर हो जाती है नेचुरली. अगर कोई किसी के कोई भाई, आई हैव सीन कपल्स फाइटिंग हो कि गीला टॉवल बेड पे छोड़ देता है, ठीक है, डजंट मैटर, गीला टॉवल ही तो है, यू एक्सेप्टेड इट, क्या ये तो छोड़ेगा रोज, राइट? सो एक्सेप्टेंस से एनहांस्ड एम्पैथी हो जाती है और रिड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, विच ऑल्सो has a lot of benefits, right? And increased psychological flexibility. So psychological benefit, when you are very accepting, तो आपकी psychological flexibility बहुत बढ़ जाती है. You are more adaptable, you are more open-minded, and that's why you're more healthy. You are actually using your mind as a tool to create happiness and not misery. And then acceptance से mindfulness होती है, because present moment awareness में रहते हो तो आप present ज़्यादा रहोगे, right? कि okay, what is done, I've accepted it. So it enhances present moment. It's the core component. Actually, acceptance is a core component of mindfulness, that you are in the present moment, and it also reduces distraction. So that is आपकी attention better हो जाती है, आपकी mental distractions कम होती हैं, आप better focus कर पाते हो when you are very accepting. Let's इसको छोड़ देते हैं, ये सारी टेक्निक्स है. I think that should be, ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा. I suppose let's do part 2 another time. Part 2, क्योंकि Part it seems so interesting. The meaning, you summarized it so well. Oh my God, मतलब there's so much in there, no? Yeah. So I like this quote, right? Out of suffering emerge the strongest souls, the most massive characters are seared with scars. And there's one favorite one, that the wound is the place where the light gets in. The wound is the place where light gets in. Wow. Yes. वो एक दिन वो ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज वो वुंड होता है ना, तो आपकी आइडेंटिटी ब्रेकडाउन होता है, वही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टर्मोइल में होता है. सो वो लास्ट फ्यू स्लाइड्स में काफी बहुत ज्यादा हो जाएगा, सो लेट्स जस्ट स्टॉप इट. We'll do part 2, क्योंकि it seems like without that it won't be complete. But time हो गया है, so we can open up to all the questions. And I just had a couple of things to share, that when you were saying SOS Village, there are a lot of other initiatives ना, यहाँ पे Killer Dave's bread मिलती है, so which is a very Killer bread. The name is called Killer Dave's bread. So it's everywhere in Costco and Trader Joe आजकल मिलने लगी है. So the story is very interesting. The guy was charged with some murder or something, and he served his sentence, or जो भी हुआ. I think he was released. Maybe it was not as much as a murder, but intent to kill or something. And then he came out and he started making bread, and that bread became so famous, and uska naam usne Killer Dave's bread diya. And he employs all the people who come out of incarceration and prison, and that's how he runs the whole business. He gives a second chance to all these people. So that's a nice story on this side. And then a couple of other things he said made a lot of sense, and I feel like sensible and mature kids are almost a sign of
parents who are immature and not emotionally available. तो उसका मुझे Yes. बहुत टाइम बाद realization हुआ कि when you say the kid is very mature and sensible, it may not be as good a sign as parents think. Yeah, when we spoke, I don't know if you remember, attachment, avoidant Hmm. attachment, when the Hmm. emotions को कुछ समझते ही नहीं है, right? They have a lot of issues in relationships because Hmm. there are people who are they become so avoidant. These are the kids who had a depressed mother or a full-time working mother, so their mother was never there to fulfill their emotional needs. So, Hmm. so this child says, I have literally brought myself up. He Hmm. himself, like one of the people, he himself used this statement for himself. I have brought myself up. He says, मुझे शादी नहीं करनी है. I don't want to. So he's an avoidant. They don't want to get into committed relationships, right? Because they think ये emotions, ये प्यार, एक तो थोड़ा डर भी है hurt होने का. So they like to be like avoidant. They don't want to get emotionally involved because they're scared of emotions, because they've never learned that emotion is normal. You can feel your emotion. There's somebody who will help you deal with them. They are So workaholics, they're very successful people, right? मैं वही बोलने वाली थी, the new generation seems to like workaholic जो parents होते हैं वो the new generation seems to want to do everything in their field and profession and not Yeah. have commitment. So I don't know if that is a sign of something in future. But I'll open up to others so the others can also talk, because I had few other points I had written, but I'll let others ask first. But that weight, obesity was really cute how you said they feel secure with their weight. Yeah, it is That like, was very, very interesting. or they have used eating for emotional regulation. When Right. you feel there's a small mother, even a young mother with a 2 years old child. She was telling me कि ये जब छिड़ जाती है ना तो छिड़ जाती है, तो मैंने कहा कि फिर ये चुप क्या कैसे करके चुप होती, बोलती है इसको कुछ खिला दो तो वो चुप हो जाती है. I said if you keep putting her into this habit of खिलाना, वो बड़े होके she'll learn कि कुछ खा लो तो मेरी emotions क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, right? So a lot of people use food for emotional regulation. Right. And a lot of parents feel guilty when their kids don't eat. Yes. And they can't sleep, especially the mothers cannot sleep at night. कि बच्चे ने Yes. खाना नहीं खाया आज. हाँ. So interesting stuff. So we'll stop the share and open up. I would love to hear Anurag if he's still there. The है क्या Anurag? Psychiatrist. अभी इसमें तो ऐसा हो गया है कि अम्मा मैडम के प्रेजेंटेशन के बाद तो वही हो गया है कि कहने को क्या बाकी रहा, वैसा हो गया है, कुछ कहने को नहीं है. ब्यूटीफुल, इट वाज अमेजिंग, इट वाज जस्ट अमेजिंग. एंड उसमें सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल एप्रोप्रिएट हैं और बिल्कुल इट्स शी इज हिट द नेल ऑन द हेड. बिल्कुल. और बिल्कुल दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन, a lot of us can really relate to that, and I think it has been beautiful. And I think कि वो जो important चीज है जो toxic stress वाले में, कि दो opposite चीजें हैं. एक तो there is too much stress outside or at home, and then there's the lack of the protective factors. ये दोनों साथ में आ जाते हैं. तो ये जब ये toxic stress होता है तो it becomes a independent and unstoppable risk factor for future psychopathology. उसको फिर आप change नहीं कर सकते हो वापस, change नहीं कर सकते हो. So what happens is कि it becomes an independent risk factor which never goes away for future anxiety and depression. It's like वो सिगरेट स्मोकिंग से वो कैंसर होता है ना, तो अभी कैंसर हो गया तो अगर आप बोलो कि अरे कैंसर हो गया छोड़ देते हैं स्मोकिंग, तो then it is too late. उसी तरह से टॉक्सिक स्ट्रेस का जब वो चेंज हो गया, वो जब रीसेट हो गया है ऑलरेडी, द स्ट्रेस एक्सिस हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस रीसेट हो गया है, तो आप वो स्ट्रेस हटा भी दो और सपोर्टिव एनवायरनमेंट में डाल भी दो, तब भी वो रिवर्स नहीं हो पाता है. That trauma doesn't get reversed. So children are up to 10 times more vulnerable to get anxiety and depression. तो अगर आप वो उन्होंने कैसे देखा कि अगर आप देखो लाइफ टाइम प्रेवलेंस ऑफ डिप्रेशन, अगर आप 5 to 10% पकड़ो आप,
तो वो अप टू 3 to 4 times बढ़ जाता है, वो 30 to 40% हो जाता है इन चिल्ड्रन हु हैव बीन एक्सपोज्ड टू टॉक्सिक स्ट्रेस। सो बहुत ही गजब था मैडम, इट्स बीन ए प्रिविलेज टू लिसन Thank टू यू। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू छाया मैडम फॉर इन्वॉल्विंग मी ऑलवेज। बहुत ही मजा आया, देयर इज नथिंग टू बी सेड। तुमको भाई हम पढ़ाने एज अ सीनियर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम ये कम्युनिटी में काम करते रहो। बस तो बस बहुत जरूरत है मैडम, वैसे भी मैं बहुत स्लो आदमी हूँ तो बार बार बताना पड़ता है। चंद्रिका भी बोल रही है। मजा आया दीदी, teaching बहुत चल इट रहा वाज अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, वेरी वेरी नाइस। Thank अंबा कुड यू प्लीज स्टॉप द स्क्रीन शेयर, अपन थोड़े बड़े दिखेंगे स्क्रीन पे। तो चंद्रिका ने भी बैठ के सुना आज, क्या बात है। तो सर्जन्स भी अब नॉलेज बढ़ाएंगे अपना। चंद्रिका और हेमा भी बैठी हुई है, हेमा ने पूरा सुना। अरे वाह, क्या बात हाय है। दीदी, हाय दीदी, आप कैसे हो? बस हम अच्छे हैं, ठीक है, बढ़िया है। मतलब आई थिंक मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें सीखने मिली आज अम्बा। मतलब I can't imagine that even though we are trying to learn about it, there's so much more. तो वो जो वो था डिस्ट्रेस विंडो, टॉलरेंस you. विंडो ना, तो इज दैट पार्ट ऑफ डीबीटी जो करते हैं कि डिस्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ाते हैं, इज दैट समथिंग अलोंग दोस लाइंस? No, this is Dan Siegel's. Dan Siegel. ओके। It is his concept window of tolerance that you go into dysregulation and then you go into hyperarousal or you go. So stress and trauma are known to decrease the window of tolerance. ओके। So this is his Dan Siegel का concept है window of tolerance. मुझे बहुत पसंद आता है because वो समझ में आता है कि भाई आप जा रहे हो तो पर आप वापस भी आ सकते हो। योगा, म्यूजिक, चैंटिंग, ये सारी चीजें आपको वापस भी ला सकती है। यू आर नॉट स्टक देयर। So that epigenetic changes that have happened, you can try and reverse some of it still. So epigenetic changes क्या होते हैं? That they turn genes on and off, right? So in case you are in a positive environment, you will not turn on the gene for that particular disease. वो एक पूरा concept है, how a stress chemical comes, how it comes and attaches to the receptor on the cell, then that receptor through the messenger RNA goes to the nucleus and then it goes and switches transfer RNA में जाके फिर वो कहाँ से on and off करता है। तो पूरा epigenetics का change है क्योंकि वो environment ने stress hormone produce किया, वो स्ट्रेस हार्मोन जाके उस सेल के रिसेप्टर से अटैच हुआ, तो दैट इज हाउ एपिजेनेटिक चेंजेस अकर। Amazing stuff. मतलब हर्षिता, शायद इसमें ना, हाँ। रादर देन रिवर्स द चेंज, द मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कि वो चेंज बढ़ता जाए, चलता जाए, कंटिन्यूअस रहे, उसको हम रोक सकते। Right, got it. Like osteopenia में होता है जैसे, you can't reverse it, but you can slow down the progress to osteoporosis. Yes. So it will help not get it off rail. Okay, चलो। तो मनीष, रीना, नीता, हर्षिता, बोलो, कुछ बोलो। हेलो, मनीष बोल रहा हूँ। मनीष बोलो। इट वाज एन एक्सीलेंट टॉक, बट मैं क्योंकि सर्जन हूँ तो मैं ऑर्गेनिक्स ज्यादा करता हूँ, फंक्शनल पार्ट नहीं देखता हूँ। लेकिन मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इस पे लाइट डालना चाहूंगा। जैनिज्म की बात करूंगा बिकॉज आई हैव नॉट रेड इन डिटेल अदर वंस, बट उसमें हमारे यहाँ जो कार्मिक थ्योरी है उसमें ना 8 कर्म बताए हैं, 4 घातिया और 4 अघातिया। इट्स वेरी टेक्निकल, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। तो नहीं, तो घातिया उसका मीन्स एक दैट व्हिच यू सेशन कैन को प्लीज डिस्ट्रॉय। मनीष, उसका एक सेशन प्लीज हमको भी समझा दो एक बार प्रॉपरली अच्छे से। मैं मनीष जी बोलने वाली थी, तुमने, हाँ, हाँ, तुम्हारी समझ बढ़ गई है, तुम उसको बहुत वेट मत करो, शेयर विद अस, बिकॉज you were saying I'll wait till I know it all, but don't wait till अभी you तुम know it ब्रीफ all. में बता दो, पर बाद में जरूर अच्छे से बताना एक बार। हाँ, तो घातिया कर्म और अघातिया। तो अघातिया आर दोस कर्म्स दैट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय बिकॉज दे हैव बीन इनहेरिटेड। बट घातिया अघातिया कर्म्स मतलब जो इनहेरिट होते वो नहीं घात कर सकते उनका। जो घात कर सकते वो एनवायरमेंटल होते हैं। और उनमें जो हम जो बोलते हैं ना, जैसे राग द्वेष जो होता है, मतलब मोह माया राग द्वेष जो भी होता है, जलन ईर्ष्या, ये सब चीजें जो होती है ये सब एनवायरमेंटल में आती है। और वो
आपके बिहेवियर और आपके उसको मतलब आपके सुख दुख को, सब चीजों को वो डिफाइन करते हैं। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं बाकी तो डिटेल नहीं समझ रहा था, तो मैं उसको कोरिलेट कर रहा था कि अल्टीमेटली आपके हाथ में है कि आप वो उन सब चीजों के अंदर अपने परिणाम खराब नहीं करोगे, तो यू कैन, जो आप जेनेटिक्स का बोल रहे थे ना, वही कि एपिजेनेटिक्स जो चेंज होते हैं, तो इसमें भी मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोला है कि यू कैन कंट्रोल दीज जीन्स एंड करेक्ट देम। ये शायद वर्ड समझाना चाह रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि आप जो लेक्चर है वो वहां से मैं कुछ सुन रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। Oh, beautiful. There's something to so it. I recently learned the word. It's called psycho spiritual science, blah blah blah. So it's like it all comes up together. Philosophy, psychology, spirituality all comes together, and that's when you ultimately understand it fully, right? Kyunki, even like what you're saying, spirituality. I read somewhere that addiction, medications, and healing and trauma therapy and all that help, but spirituality is the core thing that will change a person inside out, right? Like Yeah. inside out. everyone is helping, but the person has to do the work. No one can Yeah. do the work for the person. Wanted- So I think अच्छा, Amba will मैंने एक ग्रुप पे शेयर किया था 3 घंटे का, जो जैन फिलोसॉफी का है। दैट विल जो यूनिवर्सल ट्रूथ और वो सब की जो बात कर रहा था ना, उसमें कुछ है। तो आई वुड विश दैट इफ यू कुड टेक अ टाइम and go through it. I know it's very exhaustive, but I think then it will form a basis on which we can talk further. Manish, I will invite you for that because I listened to 1 hour. Arpita has also started listening, and few of us will listen, but you lead the course and we'll all add in as to what we got out of it. Yes, So if that you would be make a nice. presentation बना दोगे ना और ऐसा एक ले लोगे तो हम सबको ज्यादा इजी हो जाता है उसको समझने में. Because out of that 3 Okay. hours, you can almost make it a presentation because मैंने slides बचाई हैं कुछ कुछ जो profound थी. So I think we would love that with your knowledge, all the things you have so far. So you can combine science and religion and spirituality very well. So please do that. Leena, Harshita, कुछ share करोगे? नीता तो background में. नहीं, मुझे लगता है कि मनीष ने अगर वो शेयर किया ना तो अपने को समझने में ज्यादा आसान होगा, क्योंकि मुझे तो एबीसीडी भी नहीं आता उसका. समथिंग वेरी न्यू. That's a pure state when you don't know anything. You can learn everything. या और दूसरी एक दो चीजें मुझे अम्बा ने जो बताई वो कि एट अ फैमिली लेवल, एट अ कम्युनिटी लेवल, एट अ प्रोफेशनल लेवल, तो वेयर वी डोंट अंडरस्टैंड all this trauma and addiction and all this psychopathic behavior, like if we improve our awareness, so at least we can be the pillar of support for a lot of these affected people. तो सोनू तो मुझे शेयर कर दो ना. सोनू मुझे पीछे से पास कर रहा है. Demon offered you the chance to live your life over and over again, exactly as it unfolded, with precisely the same joys and heartaches and trauma. What would you do? हाँ. ये कंटेंटमेंट का एक क्वेश्चन है, हैप्पीनेस क्वेश्चनर का. That would you relive your life just the same way, or would you change something about it? Exactly. And then he sent also Proust Madeline effect का भी उसने भेजा है. There's a book about it. So I'll share that in the group. So he seems to know a lot about trauma. तो सोनू स्पीकर बन जाना एक आध बार हमारे लिए. हर्षिता अनम्यूट करिए. तो मैंने अनम्यूट किया. खाली आई रियली एंजॉयड द टॉक मिकी, बिकॉज मैंने ये साइकोलॉजी एस्पेक्ट्स, मतलब अब मैं 2 बार से तेरी टॉक बराबर सुन रही हूँ. एंड ये मेरा फ्यूचर वो है कि मैं शांति से बैठ के एक बार सुनूंगी, समझूंगी. Because see, the spiritual practice helps you to undo the effect, but then I really feel ki in the acute events and in the illness state you need therapy. Right? You really need this. And then as you mature and like you come to a little level of acceptance and understanding, then the spiritual path can take you further. Absolutely. I have one very nice heartfulness meditator. वो इतने दिन से ट्राई कर रही है कि उसकी बेटी कर ले, वो नहीं कर रही है. She's trying so hard. हाँ, पर बच्चे क्या है, children are not ready.
और उनका They are समय not आएगा ready. तो रेडी हो जाएंगे। No, very true, मिकी, and see ये जो persistence होता है पेरेंट्स की तरफ से इंटरेस्ट की, करके देख तो सही, वो कई बार इतना परसुएट करने में बच्चे भाग जाते। हाँ, वेरी ट्रू। वेरी कॉमन, मैं मेरे साथ भी हो चुका है। यस, तो मैं वो चीज देखती हूँ कि मैं हर घर जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, so I interact with the children, generally talk to them nicely, but they are not ready because they have not understood. तो मैं अभी उस चीज पे सोच रही हूँ कि how to kindle the interest in young minds. मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, हाँ, ये बोलो क्वेश्चन मनीष। का आंसर दीजिए। लाइक यू नो, आपने अगर सब वेस्टर्न में देखा होगा कल्चर में कि वो जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो एक प्रेयर बोलते हैं बिफोर टेकिंग फूड। सो उसी तरह से इफ यू नो वी कैन इम्बाइब सच अ कल्चर इन द फैमिली दैट यू नो फॉर 5 minutes we'll sit like this, or we will listen to this prayer before doing something, so that culture gradually, it's not a one day thing, वो क्या होता है कि it Yes, has to be repetitive and it has to, मतलब the depth has to be you know understood। मैं एग्जांपल मेरा देता हूँ, मैंने इसमें ग्रुप में भी पोस्ट किया था, मेरी भावना करके एक हमारा एक सॉन्ग है या भजन जो भी बोलो, तो उसमें यही सब है कि मैं कभी ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। एंड यू नो माय मदर ओनली टोल्ड मी दैट कुछ नहीं करना है तेरे को, कोई रिलीजन भी नहीं करना है, जस्ट लिसन टू दिस। एंड it helped me in the sense that you know whenever I used to feel envy or jealous, I would say कभी ईर्ष्या नहीं करना, कभी ना खुशी में बहुत ज्यादा प्रफुल्लित भी नहीं होना, दुख में ज्यादा दुखी भी नहीं होना। एंड small things when I had heard them for let's say 1,000 times, that is when you know one day it you know enlightened हुआ कि नहीं यार मैं ऐसा गलत सोच रहा हूँ, ये नहीं सोचना चाहिए। तो I think what one should do is that as their children is like 3-4 years, आप वहां से ही शुरू कर दो या इवन 1 year से भी शुरू कर दो, so it will help them you know in the long run। वेरी करेक्ट, बहुत very इम्पोर्टेंट right, चीज है। मनीष। रोल घर का मॉडलिंग, तो मैं हाँ, वही रोल रोल पूछने वाली मॉडलिंग थी कि पेरेंट्स काफी बार आके परेशान होते हैं ना बच्चों के लिए, तो ऑलमोस्ट इंस्टेड ऑफ एडवाइजिंग, I always tell them that just change your behavior in whatever ways you can, and ripple effect hopefully it will happen। तो रेशो वही, आई थिंक मेडिटेशन का नाम सुन के ही बच्चे हो जाते हैं कभी कभी, एंड आई रिमेम्बर बीइंग देयर वेयर आई कुड नॉट सिट, and my mother-in-law told me so many times about yoga, meditation, Reiki and all that. I wasn't ready till I was ready. So it's almost like timing ki baat hai, when you feel the need for it. But if parents are doing it, at least there's a role modeling. यस, घर में उनको शायद, मतलब ये व्हाट मनीष सेड इज वेरी राइट, कि बचपन से प्रेयर साथ में बैठ करके थोड़ा सा चिंतन करना, मतलब आई थिंक वी शुड जस्ट give them that how are they feeling, checking with them, and when they sit and pray, how do you feel after we do that? So Yes, asking them or interacting like that probably will be able to instill more in the children। मतलब आई थिंक अब वो अपने को शायद ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ करना पड़ेगा, अपने बच्चों का समय तो अपन ऑलमोस्ट निकाल चुके हैं। So unfortunately, the only sad news is that there's no formula that one works for everyone. So you have to customize. true. That becomes the challenge for children, and for generally it has to be a very individual approach. If it worked for everyone, Yeah. abhi tak to अपन कहाँ पहुंच जाते नहीं? We could have all been places. तो अंजीव आ गया। अंजीव, तुम्हारा एक वो ले लेते हैं फीडबैक, and then we should dissolve so we don't keep going over time. Nice to मुझे see you. सिर्फ एक ही बात बोलनी है हाँ, कि बोल। अगर अपन ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया ना बच्चों को तो वो रिबेल करते हैं। तो जब उनका समय आता है तो शायद वो बेटर अपने अपने बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन की तो बात बाद में आएगी, लेकिन अपन ने बहुत इंसिस्ट किया तो वो रिबेल करते हैं। वेरी ट्रू। वही है, रिवर्स साइकोलॉजी करो या फॉरवर्ड साइकोलॉजी करो, समझ में नहीं आता है, तो कीप ट्राइंग बट जेंटल वेज। आई थिंक अथॉरिटेरियन अप्रोच तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। दैट्स वी नो दैट बाय नाउ। अंजीव, एनीथिंग यू वांट टू से? और फिर अंबा से ताज शिव वो गवाही देंगे। तुमने बोला आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, तो शिवो हम। अंजीव। एक्चुअली मैंने
आज का पूरा लेक्चर मैं सुन नहीं पाया, मैं कॉन्फ्रेंस से लौट रहा था, तो अब मैं रिपोर्ट पूरा सुनूंगा, पूरा रिकॉर्डिंग फिर देखता हूँ। चलो, पर लेक्चर जहाँ तक सुना बहुत अच्छा था। Hmm. Thank you, Anju. Chalo, thank you for being here, Chalo. everyone. I think Neeta is in the background. I think. तो अनु क्या अम्बा 2 मिनट कर ले चैंटिंग and then we will finish. Thank you. कौन सी चैंटिंग करनी है छाया? शिवोहम. शिवो, मनोबुद्धि अहंकार। right. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोतजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। Thank you all. It was wonderful spending time with you and creating faces, nahi? Protective factors. Keep doing your part. I think. ये अपना एक प्रोटेक्टिव ग्रुप ही है। हाँ, Community है, that's family what I है। Very true. exactly felt. Yes, exactly. Learning from each other is awesome. And having the experts in different fields, psychology and spiritual and science, it's like beautiful. मैं विकी याद कर रही थी बेस्ट एंड टेलर तेरी। You remember Best and Taylor My was God, oh Vicky's my favorite God, book. वैशु याद मत करा, कितने पागलों टाइप करती थी मैं। Vicky was so fond of Best and Taylor, and that I was seeing in the amygdala and everything. तो मेरे को लगा सारी physiology आज मिक्की समझा रही है बिल्कुल। मैं वही सोच रही हूँ बेस्ट एंड टेलर कौन से सब्जेक्ट की बुक थी, मैं वो सोच रही हूँ अब। Physiology फिजियोलॉजी की बुक तेरा थी वो। फेवरेट सब्जेक्ट होता था ना, बिल्कुल उसका पागल। फेवरेट सब्जेक्ट था physiology। Oh my तो मतलब God. I would love to understand physiology from you। गजब का था वो।